औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप भी कलमा पढ़े। Assalamu alaikum. Once again, I'm here before you with another tense, the passive voice of present continuous tense. So before going ahead, let me link you with the previous studies, like in the previous lectures. Yes, in the previous lectures, like we have studied the introductory part of the, like how to make passive voice. Like two of the videos are about the introduction, while the three of the tense are like present simple tense. We also studied its passive and active structure, past simple tense, its active and passive structure with examples, and future simple tense with its passive and active structure. Okay, now here we are with the present continuous tense. So present continuous tense, first of all we have to learn the use of present continuous tense. Like for example, if someone asks you that yes, I know this is a present continuous tense, but I don't know how to use the present continuous tense, so it's quite simple. यानी एक बंदा है कि वो मुझे कहते हैं कि सर मैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जानता हूँ, लेकिन इसकी जो यूज़ है वो मुझे नहीं समझ आता. तो इट्स क्वाइट सिंपल. इसका यूज़ क्या है? बस वन यूज़ है इसका. व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन. जब हम किसी काम के दरमियान में हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जब हम किसी काम के दरमियान, मौजूदा वक्त में हम जब किसी काम के, फॉर एग्जांपल आप मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे फ़ोन आ रहा है, उसको मैं बिज़ी करता हूँ. फॉर एग्जांपल फ़ोन आ रहा है, मैं इसको बिज़ी करता हूँ. कोई मुझसे पूछे सर ये फ़ोन आप क्यों नहीं उठा रहे, मैं उनको बता रहा हूँ कि यार आई एम टेकिंग द क्लास, मैं क्लास ले रहा हूँ. सो इट मीन्स I am already in the middle of one task while another occurs at the same time. So definitely if you accept one thing, so you will reject the other. So here I accept like taking the class and I reject calling of someone. You understand me or not? Okay, so this is quite simple. Now this is its use, like when we are in the middle of an action. Now इसका उर्दू का पहचान क्या है? इसकी, सॉरी मेरा उर्दू मेरे साथ गुजारा करे यार, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है. हाँ, उर्दू का पहचान इसका जो है, उर्दू की तो इसके एंड में वो आएगा रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं वगैरह. ठीक है. नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर मतलब कि हम सेंटेंस ने, हमने इसका सेंटेंस किस तरह बनाना होता है, स्ट्रक्चर. लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर? एक्टिव स्ट्रक्चर. एक्टिव स्ट्रक्चर इसका किस तरह होगा? देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम लेते हैं बी, इसके बाद हम लेते हैं वर्ब, और इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी. याद रखिएगा, जब भी मैं वर्ब की बात करता हूं तो हमेशा के लिए ओनली जब मैंने वर्ब बोला, सो इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Okay, if it is any second or third, so then I will definitely explain whether I am talking about first form of verb or second or third form of verb. Verb plus ing and plus I will use object. Now I would like to just make a touch of this be. सुनो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जनाब मुझे ये बी का समझ नहीं आता, तो आपने सिंपली इसको बोलना होता है, ये जनाब हमारे पास ये वर्ब है, और इस बी का मतलब है होना या बनना, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, मतलब वो फैसला हमने कर दिया. प्रेजेंट में इससे क्या मुराद है? तो प्रेजेंट में इससे मुराद है इज, एम आर. इन पास्ट में इससे मुराद है वाज एंड वर, और इसका थर्ड फॉर्म है हमारे पास बीइंग, एंड फोर्थ फॉर्म इसका है बीइंग. ठीक है. नाउ currently we are basically talking about present, so here it means we will have to take only is mr here over here. So here be means
is M and R. Okay, now I will just give you an example like where we will have to use is used like with the third person singular. Like for example, I may use he is, she is, it is. Okay, Ahmad is, so third person singular. Okay, and मैंने m कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, m मैंने सिर्फ I के साथ यूज करना होता है, m मैंने यूज करना होता है I के साथ, r मैंने we you they और प्लूरल नेम के साथ यूज करना होता है. ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम, मिसाल है, हम क्लास ले रहे हैं. जब मैंने इसके आखिर में रहे हैं देखा तो इसका मतलब वी और इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, हम किसी काम के दरमियान में हैं. तो इसको मैंने किस तरह चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. सो फॉर वी, सो हम वी, तो वी के साथ मैंने क्या इस्तेमाल करना है, आर. तो आई वी यू दे के साथ हम मैंने आर इस्तेमाल करना है. वी आर, तो मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर मैंने बी इस्तेमाल किया. अब इसके साथ वर्ब, तो वर्ब इसमें लेना के लिए कौन सा वर्ब है, टेक. सो वो प्लस आई एन जी, वी आर टेकिंग द क्लास, हम क्लास ले रहे हैं. ठीक है, इस तरह इसको अगर नेगेटिव बनाए, हम क्लास नहीं ले रहे तो वी आर नॉट टेकिंग द क्लास. क्या हम क्लास ले रहे हैं तो फिर आर वी टेकिंग द क्लास. क्या हम क्लास नहीं ले रहे, आर वी नॉट टेकिंग द क्लास. लाइक दे आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स, negative structure, interrogative structure, negative interrogative structure. Like all these things are discussed in a very detail. Okay, if we are in a form of a practice then. Okay, now I would just go toward the passive structure. Passive structure. Acha, it's quite easy. Okay, like first of all I will have to bring object, the same, then I will have to bring B, plus I will include just one thing. Same is the structure of present continuous tense, sorry, present simple tense, except one thing. I will have to add just being. Object plus B plus being plus third form of verb, and then I will have to use by, then I will have to use with accordingly. Okay, in or to plus subject. Please no talking. Okay, Fawad, would you mind to sit over there so you may feel relaxed then. Okay, please sit down there. Now according to this very structure I would like to change this very sentence. Like what is the active sentence, the active sentence is we are taking the class, we are taking the class. So let's figure it out. Like this is a subject over here, this is a verb phrase, so it means this is a verb. Okay, and this is an object. Okay, now according to this very structure, first of all I will have to put object, so object is what, the class. फिर agree करना, yes sir, the class. Now class is singular, so with the singular we use is. The class, so according to the structure I use is. Here B means the same, is MR. Okay, yes sir. Class is now being, now third form of verb. So what is take and then taken? Class is being taken, then I will have to use by us. Okay, so this is what according to the structure we change the sentence. Okay, now I just want to give you the hints of this, where I will have to use with I will have to use like when the subject is not a human. Like for example I may say smoke is filling this room, so I will have to change this like this room is being filled with a smoke. Now in I will have to use when I'm talking about a country or a city.
For example, they are making BRT in Peshawar. So BRT is being made in Peshawar by them. So in Peshawar, in is used in a place. Already it was in active sentence as well. Like for example, I may say Punjab grows wheat. Punjab is growing wheat. So now I will have to change this, like wheat is being grown in Punjab. Okay. Now in, and then to is used with two verbs when the verbs are know and marry. Okay, my brother. So this was our today's lecture. If you have any question, you can ask me directly. And those who are watching my videos, if you have any questions, you are allowed to ask me in the comment box. And if you like and can understand my lecture, so I'm not going to ask you to subscribe my YouTube channel and press the bell icon, and also like and share my videos. Like I mostly don't ask you do this because you yourself will do it. Okay, thank you so very much. Assalamu alaikum, dua mein yaad rakhna.